Good morning, grade 9. Today we are going to start our next chapter, which is polynomials. So, first of all, we will discuss about algebraic expressions, terms, variables, constants, coefficients. Then we will go for polynomials and the degree of the polynomials. So, let's start our new topic, polynomials. So, first of all, algebraic expression. So I would like to tell you about the algebraic expression first. What is algebra? What is algebra basically? So algebra, we can say that algebra is a branch of mathematics where we deal with some symbols and some operations. Means symbols in which way? Symbols like A, B, C, D, alphabets, letters we use there, and some operations between them along with the numbers. So what about algebraic expression? Let's see. Algebraic expressions are a combination of terms connected by the operations of addition, subtraction, multiplication or division. Terms. What do you mean by terms? We can say that terms is the combination of symbols, I mean letters, alphabets or numbers. You can see here I have written examples also, 5x square minus 4x, but they are the examples of which expression? Just see here, the example of algebraic expression is 5x square minus 4x plus 9. So here we are using three terms. The first term is 5x square. So 5x square itself is a term which has one number and one variable along with the power exponent. The second term is minus 4x. Minus हम साथ में लेंगे, minus 4x is the second term of this expression and plus 9 is the third term of this expression. In the same way we can tell about this expression also. A cube is the first term, this one is second, third and fourth. So algebraic expression are a combination of terms. इन सब का कॉम्बिनेशन होता है टर्म्स का कनेक्टेड बाय द ऑपरेशंस, और जिनमें ऑपरेशंस लगे होते हैं बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and division, like this. So as we have discussed about the terms here, these all are the terms. In the second expression, a cube is itself a term, minus 2a square is the term, plus 6 is a term and minus 6a, it should be 6a. 6a. Now what about the variables? Variables, as I told you, symbols which we are using like letters, alphabets. So A, B, X, Y, whatever, C, D, E, whatever we are using in the expression, they all are the variables. Like for example, in this expression, X is the only variable which we are using here. Here we are using A. So A is the only variable which we are using. What about the constant terms? Constant, you can see here in the whole expression, 9 is the single number. 9 is the single number without any symbol, without any variable. So that means 9 will be the constant of the expression. Here we have minus 1. Minus 1 is the constant of the variable. So in this way we can take many examples, 7, 11, 9, minus 1, 6. The single whole number or integers, we can say that the constant without any variable. What about the coefficient? Coefficient is like, for example, we have taken 5x square. The 5x square, in this term, the coefficient of x square, we will tell you the coefficient of x square. X square का coefficient कौन होगा? 5. Coefficient क्या होता है? The number which is in the form of multiplication with the variable along with the exponent. तो यहाँ पर x square का जो exponent हुआ 5 हुआ. For example, यहाँ पर बात करेंगे second term की. If we talk about the second term, 4 minus 4x है, तो यहाँ पर minus 4 is the coefficient of x, is x only. What about 9? 9 is a constant term, तो we cannot say कि ये coefficient होगा. और अगर if we have to tell, then we can say that 9 is the coefficient of x to the power 0. We don't have x to the power 0 here, but we can suppose here x to the power 0, because x to the power यहाँ पे कुछ नहीं, तो we can suppose it 1, x to the power 1. So in this way we can tell the terms, variables, constant and coefficients.
न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। तो बेसिकली न्यूमेरिकल फैक्टर जो होता है किसी भी टर्म का, वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -2a² में जो -2 होगा वो कोएफिशिएंट होगा a² का। यहाँ पे +6 जो होगा वो a का कोएफिशिएंट होगा। सो लेट्स स्टार्ट द पॉलिनोमियल। एनी algebraic expression with more than one term is called a polynomial। कोई भी algebraic expression अगर हो जिसमें मोर देन वन टर्म दी हो, अगर वन टर्म से काम नहीं चलेगा, हमें मोर देन वन टर्म चाहिए रहेगी उसके लिए, तो ही वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। इट्स कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स होता है मैनी, तो ऑब्वियस सी बात है हमें बहुत सारे टर्म्स चाहिए होंगे। एंड इट हैज़ नो टर्म विथ अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। हमें इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कि एक्सपोनेंट जो होना चाहिए पॉलिनोमियल में वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सो एक्सपोनेंट शुड नॉट बी नेगेटिव, वाइल इन algebraic एक्सप्रेशन इट मे बी, बट नॉट इन अ पॉलिनोमियल। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं चाहिए हमें, होल नंबर के फॉर्म में ही एक्सपोनेंट चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। एग्जाम्पल 3x² + 5x की टू दी पावर 4 - 9x - 8, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल, और वी कैन से दैट दिस इज algebraic एक्सप्रेशन ऑल्सो। Now let's see the degree of the polynomial. What about the degree? The highest power of the variable is in a polynomial of one variable is called the degree of the polynomial. Degree is very easy. How to get the degree of the polynomial? It is very much easy. You can see here we have 4 different terms. हमारे पास 4 terms है and we need to see the powers or exponents. So here we have 2, here we have 4, here we have 1, because कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब हम 1 सपोज करेंगे अपर पावर में, एंड हियर वी डोंट हैव एनी वेरिएबल, तो दिस इज द कांस्टेंट टर्म, तो वी हैव टू सी दिस 3 टर्म्स। तो द हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 है, 4 है या 1 है? 4, सो डिग्री वुड बी 4। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। तो इन सब में चारों टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर आ रही है 4, दैट मीन्स डिग्री विल बी 4। इफ़ द पॉलिनोमियल्स इन्वॉल्विंग 2 और मोर वेरिएबल्स, हाँ इन दिस केस अगर पॉलिनोमियल्स के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, जैसे x और y भी हो, p और q हो साथ में, इन दैट केस देन द सम ऑफ द पावर्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज टेकन अप एंड द हाइएस्ट सम सो ऑब्टेन्ड इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, आपको ईजिली समझ में आएगा। Yes, here we have example 4a² + 9a³ - 3ab² - ab + 5. Here we have 5 different terms. So, and the 2 variables. So how can we find out the degree? You have to sum. You have to add the exponents. Like in the first term, a² and b. So a² and b to the power 1. So we need to add both the powers. 2 + 1 would be 3. Then a³ b², that means in the second term a³ b², तो 3 + 2 would be 5. In the same way 3 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, और 5 is the constant, that means power is 0. So इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है? 5, यानी कि a³ b²। यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है इसका जो एक्सपोनेंट आ रहा है उसका सम आ रहा है 5, that means 5 would be the degree of the given polynomial. तो degree of the polynomial is 5. So in this way we can find out the degree in this case also. So thank you so much for today's topic.